बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र-ए-नौ। आज हमारे मेहमान एम्बेसडर कामरान शफी साहब हैं और जो मौज़ूआत हम डिस्कस करेंगे वो उनमें पाकिस्तान की सूरत हाल ऑब्वियसली सबसे ऊपर होगी और यूनाइटेड नेशंस में ख़ासतौर पर न्यूयॉर्क जनरल असेंबली में जो पाकिस्तान डेलीगेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने फॉरेन अफेयर्स में जो स्पीच दी है और क्वेश्चन आंसर जो फेस किए हैं उनके बारे में बात होगी और पाकिस्तान में सैलाब की जो सूरत हाल है उसके रेफरेंस से जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके बारे में और इसहाक डार की जो है मुतवक्किल वापसी उस पर बात होगी और उसके इम्प्लीकेशन क्या हैं उस पर। उसके बाद जो है ये सियासी सूरत हाल मुल्क के अंदर जो है इमरान खान के जो मुजवजा धरने और उसका जो इनकलाब काफ़ी दिन से आ रहा है उसके बारे में कि वो इनकलाब कैसे आएगा और क्या होगा और इस पे बात करेंगे। और सबसे पहले जो एक खबर है, अगर आप उस पर अगर बात करना चाहें तो जो काफ़ी अजीब सी भी है और हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो ये बार बार ये कह रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, माली तौर पे हम बहुत परेशान हैं, जो रेवेन्यू है वो जो है टारगेट को पूरा नहीं हो रहा, जीडीपी जो है वो 5 से 4, 4 से 3 और अब वो कह रहे हैं कि शायद 2% तक चली जाए सारी इन डिफिकल्टी। तो इन हालात में ये डॉन की खबर है, शायद आपने देखी हो, कि कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है कि हमारे 4 स्टार और 3 स्टार रिटायर्ड जो जनरल्स हैं उनको ये इजाज़त दी गई है कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां इंपोर्ट कर सकते हैं ड्यूटी फ्री और 6000 सीसी की गाड़ी है जो वो इंपोर्ट कर सकते हैं। 4 स्टार जनरल्स है उसको 2 इंपोर्ट करने की इजाज़त है, 3 स्टार को 1 इंपोर्ट करने की इजाज़त है रिटायरमेंट के बाद। तो सर ये हो क्या रहा है ये? जी मैंने देखी थी खबर। दिल नहीं मानता इसको कि जो मुल्क की हालत है और उसमें ये होना, आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव। एक बात है सर उसमें, one thing, the news says that it has yet to be approved by the Prime Minister and जो हमारा Federal Bureau of Revenue है FBR, they have not issued the relevant notification as yet. So I don't know where do we stand, but cabinet has approved it. So, sorry. Yeah, but if the cabinet has approved it, obviously the cabinet meets under the chairmanship of the Prime Minister. हाँ, so मुझे तो बड़ी गाबल्ड सी खबर लगती है. It is extremely hard to believe. That is what I'm saying. But the government must issue clarification on that, and if it's not correct, then they should say what it is, because this is damaging politically. Its optics are bad, and financially also, it doesn't make any sense. Exactly true, especially when there's so much inflation in the country, people are finding it hard to get by. 1/3 of the country is drowned. Yes, indeed, they must issue clarification. जैसे मैं कहता हूँ तबीयत नहीं मानती इस चीज को। सर ये हमारे जो कार्स और प्लॉट्स का जो सिलसिला है ये मतलब इट इज गोइंग टू फार। इससे पहले जो शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, वो साल 2 की बात है, वो उन्होंने पहले नई गाड़ी अपने लिए मंगवाई, ऑफिशियल गाड़ी, फ्यू डेज बिफोर रिटायरमेंट। फिर वही गाड़ी जो थी वो उन्होंने ले जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा कि यू कैन नॉट टेक इट बिकॉज यू आर एंटाइटल्ड टू लोअर सीसी कार। He did a full court reference and the full court approved that Chief Justice can take this car, and he took that car. कमाल है, अच्छा वो आपने बता दिया, मुझे ये याद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में एनीथिंग इज पॉसिबल। मैं तो कई दफा कहता हूँ कि इफ द सन राइजेस इन द वेस्ट डोंट बी टू सरप्राइज्ड। नहीं, this is पाकिस्तान, एनीथिंग इज पॉसिबल। This news was quickly blacked out. It appeared in the newspapers, और एक आध दिन के बाद then it was removed. Nobody discussed it.
वही ना, यही होता है पाकिस्तान में। आई मीन ये तो एक छोटी सी चीज है, जनरल जिया का जो हादसा था जी, जी। उसकी रिपोर्ट का है। हाँ यू जी। नो, एवरीथिंग shoved under this humongous filthy carpet, जिसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान जो हमारे जी, पास है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें they just shoved under the carpet, खत्म। कुछ पता नहीं लगता। उनका बेटा एजाजुल हक चीख चीख के थक गया कि मैं, एंड ही पॉइंटेड फिंगर्स एट पीपल जी, जी। ओपनली। उसने कहा ये असलम बेग और is the main, in my view, in his view, हुँ, हुँ। the main culprit. And what happened to the report? Nothing. Nothing नो came of it. नथिंग रिपोर्ट तो कभी यही होता है, यही वो होता तो कमीशन की रिपोर्ट तो कभी आती नहीं। कमीशन तो है। बनाते इसलिए हैं ताकि लोग थोड़े ठंडे हो जाएँ, उसके बाद जो है बस वो एब्सोल्युटली, बात खत्म। एब्सोल्युटली। ओसामा बिन लादेन का जो था, वो कहाँ है रिपोर्ट? वो सारी सर वो कुछ तो स्निपेट्स आई थी बीच में, Sir, स्निपेट्स it आई took थी। us more than 50. It took us more than 50 years to see the report of Hamid Rahman Commission, एग्जैक्टली, and एग्जैक्टली। वो भी उस वक्त आई जब एक इंडियन न्यूज़पेपर ने उसको छाप दिया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड और अच्छा, तो ये लोग लोग बेवकूफ नहीं है, उनको कहीं ना कहीं से खबर आ ही जाती है यार, कोई र्यूमर, कोई ये कोई वो, विच इज व्हाई हम हमेशा डिस्टेबलाइज ही रहे हैं ना। एज आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट देयर इज नो अदर वे टू से इट कि कुछ पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं। और 75 साल बाद, 76 साल बाद ये होना मुल्क के साथ बड़ी सख्त ज्यादती है। अच्छे लोग हैं हमारे, ज़हीन लोग हैं हमारे, जो बच्चे हैं, यंग बैंकर्स एंड मीडिया पीपल, इंडीड ये टेकीज जो हमारे हैं, दे आर सच फाइन यंग पीपल। यू नो, व्हाट फ्यूचर डू दे हैव अगर पीपल का ऐसे ही तो चलता मतलब नहीं है रहा ना, तो? पीपल डोंट काउंट। प्रॉब्लम तो ये है कि पीपल डोंट काउंट इन द पॉलिटी। इट्स एग्जैक्टली, बाकी हर जगह भी ठीक है, देयर इज अ रूलिंग एलीट एवरीवेयर, बट दे कीप द masses at least happy and give them the wherewithal to have their daily live their daily life। लेकिन पाकिस्तान में तो सूरत हाल ये है, और वो बद से बदतर होती चली जा रही है कि जो रूलिंग एलीट है, दे आर amassing all the resources। पहले एग्रीकल्चर लैंड पे सारा होता था 50-60s में, और अब जो है वो अर्बन प्लॉट्स पे है सबका जोर। 2 प्लॉट, 3 प्लॉट, 10 प्लॉट, 20 प्लॉट, और 1-1 करोड़, कितने करोड़ के प्लॉट्स हैं वो। और अब ये गाड़ियों का सिलसिला साथ में शुरू हो गया है। तो और जो मैसेज है उनका तो वो तो काउंट ही नहीं होते। उनको तो काउंट ही नहीं करते कि उनको उनका बन क्या रहा है उनका। और सबसे सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि वो जस्टिफाई करने के लिए, मुझे याद है बहुत देर से, 50 साल पुरानी बात है ये, 60 साल कि क्या कहते थे, मैंने तो फौज में सुनी थी ये बात कि हम ये अलॉट करते हैं जमीनें पंजाबियों को और पठानों को, क्यों, और पश्तूनों को, क्योंकि सिंधी काम नहीं करते। जी, जी, हाँ, वो सारे सिंधीज आर लेजी एंड दे डोंट वर्क, तो उनकी पैदावार कम होती है, इसलिए हम भी, आपको क्या लगे, वो उनकी जमीन है, वो खाते हैं उस पे, वो है वहां के सर, रहने सबसे वाले। पहले तो वो जब हाँ, गुद्दू बराज जब मुकम्मल हुआ है, सबसे हाँ, पहले तो वहाँ वो हुआ, दैट्स वेयर अयूब खान एंड ऑल दिस बिग विग्स, दे वर अलाउड लैंड। अयूब खान वाज डूइंग फार्मिंग देयर। exactly, and senior ICSs and CSPs, या उनको they वहाँ are, and of उनको course that's उनको the मुरब्बे अलॉट हो गए, और मेनी ऑफ देम नेवर विजिटेड दैट, और उनको जो जो कल्टीवेट कर रहे थे, जो लुक आफ्टर कर रहे थे, दे वर ऑल नेटिव सिंधीज। right, right, right. लेकिन वो क्योंकि अलॉटमेंट एनीवे, सर मेरा ख्याल इस छोड़ देते हैं इसको। तो ये तो जो है बात इट विल नॉट टेक अस एनीवेयर। लंबी है। लंबी क्या है वो और लंबी है। सारों को पता, राय जी, सारों को पता है, हम कोई खबर नहीं दे रहे किसी को, that सारों is the, को मालूम है ये। that is पाकिस्तान actually the sad, that is actually the sad part, and also the good part कि लोगों को पता है। The sad part is कि उसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन Absolutely. लोगों को, आवाम को, मीडिया को पता है, और वो जो खबर है, वो जो लोगों की अवेयरनेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ जो स्टैंड लिया, उसने जो है सेक्रेड कॉज को जो है टच कर दिया। और अब जो इमरान खान जो करता फिर रहा, दैट इज एक्सपोज देम इवन फर्दर। तो वो तो बात है, और लोगों को जो है पता है, वो आवाम को
people's sixth sense जो है ना सर, वो I believe in that. Then they don't take a wrong decision. Absolutely, and you please look at our elections. Every time अभी एक नई चीज शोशा छोड़ा हुआ है कि पढ़े लिखे जो है वो सिर्फ वो वोट डालेंगे. कमाल की बात है. इस मुल्क में 40% लिटरेसी भी नहीं है, क्योंकि वो लिटरेसी कहते हैं जो अपना नाम लिख ले. अखबार पढ़ना उसमें नहीं है शामिल. नहीं जी हाँ. या खत लिखना, नाम लिख ले तो वो लिटरेट है. तो ये तो यू सी इट्स सच अ लॉट ऑफ नॉनसेंस. जैसे मुशर्रफ की जो बीए डिग्री थी, बीए कैंडिडेट, क्या नॉनसेंस है. जो हमारे अनपढ़ लोग इतने वाइज और जो जानते हैं चीजों को, अनपढ़ भी, वो बीए की डिग्री लगा दो. एंड दिस इज ओनली एलिटिज्म और कुछ नहीं है. और इसको तंग करो और लोगों को बाहर निकालो from ruling themselves. तो चलने नहीं देते ना यार. बात ये है, चलने नहीं देते. गांव में जो लोग बैठे हैं, जो हमारे यहाँ पंचायत है, जिरगा है, औताक है, ये जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो लोग चलाते हैं इंस्टीट्यूशन, जो इन लोगों जो इसमें इन्वॉल्व हैं, they are very wise people, and these institutions have evolved over centuries. Yeah. I remember the small boy. हमारे वहाँ गांव में पंचायत में used to meet every जुम्मा, every जुमेरात, and I used to also go as a small boy and just sit there and watch the proceedings. Amicable. वो जो लड़ाई फलाने ने उसको छुरी दिखा दी, दोनों को बुला लिया. क्यों भाई? हाँ जी. क्या बात है? तो भाइयों की तरह रहो, फलाना तुम्हें 100 रुपए जुर्माना इसको भी दो, वगैरह. So no, बड़े अच्छे सिस्टम है हमारे. लोग हमारे बड़े वाइज हैं. It is only elitism, that's all. जो elitist हैं, वो they want to keep more and more people out of the game. That is the problem. Because they don't want to share. Yeah. और the sad part is जो resources हैं, they are shrinking. जो elite है, उनका size बढ़ता जा रहा है. Their greed is growing, और that is creating serious stability problem, because this is becoming a top heavy system. And और जब टॉप हैवी से हैवी होता चला जाए, ऊपर कोई भी बिल्डिंग हो, कोई स्ट्रक्चर हो, उसका टॉप जो है उसके बेस से बड़ा हो जाए, तो क्या होगा? इट विल कोलैप्स. बिल्कुल सही. तो बिल्कुल सही. इट्स द पिरामिड अपसाइड डाउन. टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ब्यूरोक्रेसी के एक्सपेंशन देख लीजिए, मिलिट्री का एक्सपेंशन देख लीजिए, पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनका एक्सपेंशन देख लीजिए, कैबिनेट का साइज देख लीजिए. दे हैव ग्रोन एनॉर्मसली. लेकिन लोगों के लिए डिलीवरी जो है वो नहीं है. तो सर लेट्स गो मूव टू UNGA. तो सर पहले लेट्स स्टार्ट विद प्राइम मिनिस्टर स्पीच. प्राइम मिनिस्टर ने कल ये बात कही है, और ये कैन यू रीड इट सर? Yes, I can. So this is very significant. The entire definition of national security has changed today, and unless leaders of the world come together to act now behind a minimum agreed agenda, there will be no earth to fight wars over. Acha, to be frank and to admit it, I hadn't seen this bit. I'd read generally, but ये मैंने नहीं देखी. It's beautiful para this. Yeah. It's very, very nice. So and exactly, it has changed completely. तो इसमें बहुत सारे इशारे हैं, बहुत सारी institutions के लिए. So इसमें I would like to elaborate on that. What it means, how the security definition has changed, what the world is required to do, and how foolishly all of us are contributing to our own destruction, actually, exactly. The way we are going. Exactly right. The main thing here is the nuclear bomb. That is the main thing. Now see what's happening in Russia and Ukraine. रूस ने इतना कुछ तकरीबन खुला कह दिया है कि हो सकता है कि हम न्यूक्लियर ऑप्शन भी इस्तेमाल करें. हालांकि पुतिन ने वो उल्टा करके कहा कि those who are threatening us, the wind can blow your way. Nobody's threatened him with nuclear weapons yet, from what I know. So I think that is the basic thing. And this is just self-destruct करने वाली बात है, as you said. So I think the Prime Minister is perfectly right that national security, I think national security is more a literate, healthy population which is given the chance to grow
and to innovate. That is what it is. और फिर उनमें एक जो बंदा, मैंने तो इसमें काफी आर्टिकल भी लिखे थे कि अगर आप ये पॉपुलेशन को कर लें तो आपके पास 220 million F-16 होंगे. I mean, your people are your strength, and so any army or air force or navy can't fight alone. The people have to be behind them. And I think we have to look very carefully at that. ये बड़ा अच्छा सेंटेंस था इसका शहबाज शरीफ का. और फिर जो बिलावल भुट्टो की जो थी आंसर टू दैट लॉबियस्ट, इमरान खान का लॉबियस्ट जो है, उसको जो आंसर था आपने देखा होगा जी, वो उसमें भी उसने बड़ी अच्छी बातें की कि it's taken us such a long time to bring in democracy. Because many forces don't want democracy, and we know that. So, वो बड़े अच्छे इशारे हैं इसमें. Both of them did extremely well, I think, extremely well. And another thing which Bilawal Bhutto said was that about Imran Khan. उस पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो कि the difference is that what Imran Khan wants is not democracy, not will of the people. What he wants is that he is constantly asking the intelligence agencies and the armed forces to come to his help and his rescue and put him back on the throne. Exactly. And he also signaled that we know how he came in, how he was rigged into power. That is a very good thing to say out loud. So, you see, I've lost. Yeah. Now, just see how the PTI has behaved during this UNGA meeting. Yani, the Prime Minister meets the French President, and Dr. Yasmin of the PTI sends a signal to the TLP. Yani, wo Security Council का permanent member नहीं है. Don't you need? Hasn't France done so much for you? And to bring sectarianism into it, and religion into it. And Macron is the only head of the state who has offered to hold international donors conference in Paris to help raise funds for the flood victims in Pakistan. Exactly. यही तो बात है. So I don't know. These people are they're all youthias, and she's a youthni. I mean, that's all I can say. बड़े अफसोस की बात है that this is how you try and puncture all efforts that are being made to save the country for your own narrow political gains. However, I will say that our foreign minister should have mentioned the disappearances that happened of journalists. Matiullah Jan was kidnapped for a whole day and night. Absar Adam was shot. Asad Tur was beaten up in his flat. So ye baatein bhi zaruri thi कहनी, then that other gentleman from the SEC, I think, was it the SEC, who was disappeared and his family was told he's gone for a holiday to the northern areas. Shimali ilaka jaat mein. Am I right? So these things should also be mentioned. I mean, the worst fascist rule that we had was Imran Khan ke time mein. And his lobbyist has the gall to say this on a public forum. Very, 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 very childish and infantile. Sir, on another note, we know that Imran Khan and his cabinet members had been lobbying and pleading that President Biden should make a phone call to Imran Khan. That phone call never came. And here is Shehbaz Sharif. He had a meeting, not a formal meeting, but he had a photo session with him, had a chat with Biden. So how would you like and the first lady and the first lady and look at their arms. Look at their arms. They are holding their arms are behind each other. That's right.
That's right. It's a, No, it's a it's a semi-hugging graceful position. picture. It's such a graceful picture, and it was so funny watching this His Excellency Mueed Yusuf, the National Security Advisor, being interviewed by USIP, his own, where he's जी. stayed for many years and probably still there. I don't know. उधर जाके कहता है कि and he won't even call our prime minister, the president. Whinging and whining like that in a big think tank which is paid for by Congress at the US. Mhm. It was ridiculous. Then on top of that, he's saying if he does not call, we have other options. Yes, quite right. But if President Biden doesn't call you, you will ask Putin to call him or what? Yes. Yही तमाशा है यार. This is what happens. This was really unbecoming, making a laughing stock of the Totally. country. Absolutely. The entire foreign policy setup was working on just one agenda, that President Biden should make a phone call. But is this the way you run a country? Phone call or no phone call, that doesn't matter. It's just so stupid, and that's all I can say. Amkana baat hai. Khair, And so there is other controversy. They have made controversy on this young lady. She met the Prime Minister, and one thing which some has noted that she extended her hand for handshake, because the Prime Minister had been shaking hands with other ladies, and then Prime Minister instead of shaking her hand, traditionally put his hand on her head, which is our traditional way of greeting our young women. Exactly. Our daughters. Younger girl. This is younger women in the family. Yes. So, no, it is so graceful. Then her husband was there. उसके साथ फिर हाथ मिलाया. And she's such a good girl. I don't know why people have a problem with her. आज तक लोग कई यूथियां उनमें शामिल हैं बिल्कुल कि उसको गोली लगी नहीं, सब ये झूठ था वगैरह. ये जो पीटीआई वाले जो हैं, they know what the fact is. वो deliberately जो बोगज़े मुआविया का जो मुहावरा है, उसमें जो है they are supporting this narration कि she is a threat to the national security, she is a sellout to the West, and she is working for Western agenda and all those kind of things. Of course. I was so happy traveling in your state, San Francisco में गया, कोई साल डेढ़ दो की बात है. So I was visiting my daughter there, so we were walking down the main street. कौन सी main street है San Francisco में? The long main one जिसपे ट्रॉली भी चलती है. खैर उस पे जा रहा था, तो then I saw a neon sign with her on it, coming on and off and on. I felt so proud कि देखो ये हमारी लड़की स्वाद की ये सैन फ्रांसिस्को की स्ट्रीट्स पे इसकी तस्वीर दिखा रहे हैं. यहाँ एलए में लगी हुई थी इसकी तस्वीर, जो पास ऑन एक है ना ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यहाँ लगाई थी तस्वीर on so many places along the freeway, and मलाला की फोटो थी साथ में, और साथ लिखा था girls should read history and make it true. Exactly true. Now actually this is also an elitist thing, by the way, कि जो हमारी elites है ना, वो stomach नहीं कर सकती कि she is so popular, you got the Nobel Peace Prize, and so on. They can't seem to stomach it. The worldwide popularity that she has. The youngest recipient of a Nobel Prize. Yeah. So it's very, very sad. Very sad. So, हमारे पास दो लोग हैं पाकिस्तान के जो who got Nobel Prize. One was Dr. Abdul Salam, and the second is Malala, and we practically disown both of them. Exactly. दोनों को revile करके, it's so sad. So Abdul Salam was a Qadiani, but that was not a secret. But we are not concerned his religious ways. We should be concerned about his contribution to science. We don't want to run a Qadiani nuclear, Qadiani theoretical physics. He was a Pakistani, and he brought us fame
एंड आई रिमेम्बर सो वेल, जब मैं लंदन में पोस्टेड था तो वाजिद साहब ने मुझे बुलाया तो कहने लगे कि बीबी ने, प्राइम मिनिस्टर ने कोई एड भेजी है बिकॉज डॉक्टर सलाम इजंट वेल, तो चलो मेरे साथ चलते हैं ऑक्सफोर्ड जहाँ वो रहते थे। तो मैंने कहा चले सर। तो वी वेंट टू ड्रोव टू ऑक्सफोर्ड, नॉट सो फार। यार उनको पहले बताया वो था उनको डॉक्टर साहब को कहा हाँ, तो लेटे हुए थे वो अपने पलंग में। तो वाजिद साहब ने उनको एक पैकेज दिया कि ये आपके लिए जितने भी पैसे थे वो मेरी बीबी ने, प्राइम मिनिस्टर ने भेजे फॉर योर यू नो टू लुक आफ्टर यू। एंड ही सेज, ही shook his head, he shook his head, no, and he just said दुआ दुआ दुआ, मेरी दुआ दे देना उसको, मेरी नहीं चाहिए, थैंक यू। यू नो कितने अच्छे अच्छे लोग यार, यू नो उनको I don't know why we take on Allahji's responsibilities. Let him sort these whoever out. He is the creator, you know, and उसके सामने सारों ने साथ दे रहे हैं, अपना साथ दे लें। यहाँ इनकी कब्रें उखाड़नी, you know, it's really very sad, extremely sad। अभी तो शुरू किया, बहुत अफसोस की बात। This intolerance is growing, and I don't know where we are heading, if we are heading anywhere. नहीं, see what we do to our Shias यार, वहाँ देख लो। I mean, you know, it's becoming so bad now. उस दिन एक ट्वीट थी इनकी फ्रंटियर के सेनेटर फरतुल्ला बाबर नहीं अफसर से आप खटक साहब की। अच्छा, वो ये था कि जो फाटा में भी हो रहा है, इट इज टेकिंग ऑन अ सेक्टेरियन एज। जो तालिबान वहाँ सेटल हो रहे हैं, हाँ, Taliban, they are extorting people, they are extorting money out of businesses and so on in Fatah, that it is also taking on a sectarian thing. They are all Sunnis, the Taliban. But it is taking on this thing, and it's very, very dangerous. And I agree with it. बहुत ही dangerous चीजें हो रही हैं वहाँ ऊपर फाटा में। और अली वजीर आज तक अंदर है। मैंने तो नहीं सुना कि वो रिलीज हुआ है अभी तक। नहीं सर, वो उसका नहीं हुआ बेचारे का। दैट्स रियली वेरी सैड एंड इट्स नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, we keep saying we're a nuclear power and so on. Yes, we're a nuclear power and we're the 5th largest army in the world and so on and so forth. Very good, excellent. मगर can this country which is a nuclear power not just let him go? 2 साल उसको बंद रखा है यार। You prove nothing, you know. So why can't they do it? I mean, you know, why can't he just be let go? वो कहते हैं पैसे ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो बहुत सारे केसेस हैं और सारों में बेल करनी है। कितने लाख रुपया बनता है वो जो मकान है। बड़े अफसोस की बात। सर, मूव टू डिफरेंट सब्जेक्ट। ये अतर मिनल्ला जो हैं, इन्होंने कल स्पीच की है वहाँ इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में, 9th इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस। और इन्होंने जो है वो डिस्पाइट ऑल द व्हाटएवर ही हैज बीन डूइंग एंड अदर जजेस हैव बीन डूइंग, ही डिड से कि अदलिया ने गासिबों का साथ दिया है, हमेशा अदलिया ने गासिबों का साथ दिया है। तो डू यू सी दिस एनी, इट इज एनी समथिंग positive coming out of it, or it's just a lip service? No, I think it's extremely very brave of him to have said it. I'm sorry? No, sorry. This was the... Okay. तो ने बड़ी बहादुरी उन्होंने दिखाई और सच्ची बात है जज साहब ने। Let's see if it has any consequences. I hope there are no consequences for him, of course. But let's see, किसी को कुछ समझ आती है नहीं आती। जैसे पिछले बार भी हमने वो ही कहा, कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर समझ आ जाती है तो फिर मुल्क बच जाएगा, नहीं अगर समझ आती तो बड़े खतरे हैं आगे बहुत। उसमें ये तो कॉन्सिक्वेंसेस पहले से नजर आ रहे हैं ना, बिकॉज ही इज लिटिल बिट आउटस्पोकन एंड हैज व्यूज व्हिच आर नॉट 100% acceptable to the powers that be. He is not being elevated, not being considered for elevation to the Supreme Court.
Yeah. उसमें जो बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस ने जो लिस्ट बनाई हुई है, उसमें इनका नाम शामिल नहीं है, और लड़ाई इस वक्त यही है। तो कि आप सीनियरिटी जो है उसको मद्देनजर रखें, बट इंस्टेड ऑफ कीपिंग सीनियरिटी, जूनियर जजेस को लेके जो है वो ही वांट्स टू स्टैक द कोर्ट। एंड तो इस पे so what's your view on this it's a very important issue for Pakistan, the Pakistan judiciary. Okay, how the judges should be elevated to the Supreme Court? Rightly by seniority and seniority alone. And Justice Qazi Faiz Isa, I read his letter. Did you read it? That he wrote to all the judges. Two of them wrote it. Justice Isa and another judge. So उन्होंने तो साफ लिखा है that they literally said that misstatements were made. That the Chief Justice walked out of the meeting of the Judicial Council and so on, and it's completely wrong to bring up people who are friends with you or who served with you in the same law firm or whatever. It's just wrong. It should be the Chief Justices of the High Courts, indeed, who should be elevated. And that is how it always was, I think. तो अभी आके हमने देखा है कि जूनियर जजेस से पैक कर रहे हैं कोर्ट्स। सर, इससे पहले आपने देखा होगा जब ये डिसीजन किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस what was his name? I'm forgetting. Who gave that judgment on judiciary? So it was Benazir's comment, and then followed by Nawaz Sharif's comment. He said that if government does not accept, this was before the 18th Amendment. If the government has any objection to a judge, government should record those reasons in writing and say what are the objections, why this judge is not acceptable. तो सर यही प्रिंसिपल जो है ये जुडिशियल काउंसिल में क्यों अप्लाई नहीं होना चाहिए? If we are elevating a judge, so why the chief justice or whosoever is making the selection should not give this in writing that this person is qualified on this basis, and there should be a set criteria for that. What experience, how many judgment and seniority and all this, and then if they are accepted, fine, then we have the criteria. But if they want to reject somebody, then this Supreme Judicial Council they should give their view in writing. Each member should give their view in writing that this gentleman, this lady, this judge cannot be elevated for these reasons. Nobody will. This is Pakistan. Nobody will put it down on paper. So that, that's why everything is done secretly. And it's only brave judges like Justice Isa who came out with what actually happened. I'm sorry, sir. It was Justice Sajjad Ali Shah. Sajjad Ali Shah, okay. Sajjad Ali Shah, who was otherwise who was creating problem for Benazir's government, and then Nawaz Sharif's government came and he was creating problem for them. He was also going too far. But this judgment which he gave was really far-reaching. Yeah. But लिख के कोई भी नहीं देगा, बिल्कुल आप लिख ले। कोई यानी कौन कह सकता है कि Justice Binalla is not being elevated because this is wrong with him? Nobody will say it. सवाल ही पैदा नहीं होता. And he is perfectly qualified. But we ऐसे चुप करके ही करते हैं, just pull the carpet from under your feet. नहीं सर, ये तो कोई तरीका नहीं है. मतलब सिविल सर्विस में, मिलिट्री में, मतलब वहाँ प्रमोशंस होती हैं. इट इज अ काइंड ऑफ प्रमोशन आल्सो. वहाँ प्रमोशंस होती हैं, मतलब बड़ा सेट क्राइटेरिया है उसमें, जो है आपके वो जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होती है, वो उसके नंबर्स है, वो काउंट किए जाते हैं. वो उसके हिसाब से आपकी प्रमोशन होती है या नहीं होती. तो यहाँ पर जो है ठीक है, आप चीफ जस्टिस की या वो सुप्रीम कोर्ट जज की ACR नहीं लिखी जाती और नहीं लिखी जानी चाहिए. दैट्स नॉट द वे, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. लेकिन कोई ना कोई तो क्राइटेरिया आपको होना चाहिए कि टू एलिवेट पीपल टू द हाई कोर्ट एंड देन टू एलिवेट पीपल टू द सुप्रीम कोर्ट क्या करना क्या चाहिए. Exactly.
तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो चीफ जस्टिस जो पहुंच जाते हैं अपनी प्रोविंसेस के हाई कोर्ट्स पे, चीफ जस्टिस बन जाते हैं, जी जी, तो उन्हीं को होना चाहिए ना, उन्हीं को जाना चाहिए ना आगे. they should be the first, That's the yeah. thing. Yes, exactly. Unless the gentleman is ill and he doesn't want to, then you can get the next senior, whatever. But it should be according to seniority, I think. आखिर वो ऐसे तो नहीं पहुंच गया ना to the chief justiceship of their high court. So. Sir, वो आपने last time जिक्र किया था कि you had an incident on the road and police stopped you and all this. So what happened? That let's conclude on that. वो क्या था? Good one. हम यहाँ से निकले, we were going to travel about 60, 65, 70 miles to my sister-in-law's. Our daughter was coming there to see us also. जैसे ही हम निकले शहर से, तो about 3-4 miles out, पीछे वो police SUV आई, all the lights going, chon. I said, oh, ये क्या हो गया? Because I hadn't transferred the car to my name. It was still my brother-in-law there who gave it to us. So I pulled over to sergeant ने कहा, वो जैसे यूं आते हैं, वो अपनी गन पे हाथ रखा हुआ. वो तो ट्रेनिंग है ना. तो मैंने इसका नीचे किया तो कहता है, you are in no trouble. Relax, you are in no trouble. Just pull over on the verge, on the right side, on the grass verge, and just please get out of the car and just wait there. The fire truck is coming. इतनी देर में फायर ट्रक आ गया, इतना बड़ा चां करता. वो फायरमैन निकले, उन्होंने कोई retardant निकाला. It's a sort of sand, but it's fire retardant to put it on them because the car is really leaking like mad. Oh, the gas was leaking. हाँ, उसमें डाला, सारा स्प्रेड किया, कार के नीचे स्प्रेड किया. फिर वो टो ट्रक आया, उसने गाड़ी को लोड किया अपने ऊपर. फिर मैं और मेरी बीवी और हमारा छोटी टॉफी, हम उसके साथ बैठ गए अगली सीट में. वो फिर घर छोड़ के गया हमें. अच्छा, that was nice of them. No, very nice. It's so efficient, right? It's really good. क्योंकि वो कहता है, वो शुक्र है, कहता है, thank your lucky stars that I saw it. Because had you traveled so far and had you hit a bump and there was a spark, the car would have blown up. Literally. That is true. That is true. देखे ना कि कोई ऐसे बम्प आए या पत्थर लग जाए या स्पार्क से निकल आए, तो गई थी, और हम भी साथ. तो but they were very, very nice, very kind. So, it's a very civilized state, Connecticut. नहीं, बाय लार्ज एक्सपीरियंस जो हमारा पुलिस के साथ यहाँ पर भी है, जब भी कभी कोई था, तो दे आर वेरी पोलाइट, वेरी. Just don't do silly things and you're all right. हाँ, don't try to run, don't try to. Exactly. मैंने ये देखा है that on a 55 or 65 mph road, most cars travel at 70-75. अच्छा, कोई चेक नहीं करेगा. As long as you are not weaving and going in and out of traffic, driving like a fool. Otherwise, कोई नहीं करता. ये होता है कि every now and again किसी exit से पुलिस कार सामने आ जाती है और आहिस्ता चलती है वो, ताकि सारे पीछे आहिस्ता हो जाए. फिर दो दिन के बाद, exits के बाद उतर जाता है, and then he lets you go again. So because मेरा दोस्त बड़ा अच्छा है, उसका इमरान का cousin है, the lovely man, Asad Jahangir. He was the traffic police for a long time. He retired as IG Sindh. आप जानते होंगे. माजिद जहांगीर का बड़ा भाई, मेरा स्कूलिया यार है. तो वो मुझे कहता है, यार देखो, ये जो ट्रैफिक का असूल है ना, it's to keep the traffic going. It's not to stop the traffic, So you look away. If it's moving smoothly, it's moving smoothly, and let it go. अच्छा, उसकी एक मैं कहानी सुना हुआ था. It's so funny. कहता है, मैं जा रहा अपने घर. He was DIG traffic, I think. कराची में. तो मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल पे 3 बच्चियां और बच्चे बैठे हुए उसके पीछे, मोटरसाइकिल पर गोटे पहने हुए, गोटे यानी they were all dressed up. शादी पे कहीं जा रहे होंगे. नहीं. तो कहता है, मैंने उसे रोक लिया. मैंने कहा, ये शादी पे तो लेके आए उनको? कहता है, जी सर.
कहता है चलो इन बच्चों को तो बैठाओ ना मेरी जीप में और तुम आगे आगे चलो हमारी शादी की जगह जाओ दिखाओ मुझे। वहां चला गया तो देखा तो वहां शादी लगी हुई थी, शामियाना लगा हुआ था, तो वहां से उठा तो उसने कहा चलो देखो तुम्हारा मोटरसाइकिल 2 दिन के लिए कैद है, अगर तुम स्कूल लेके जा रहे होते इनको तो मैं तुम्हें कुछ ना कहता, लेकिन तुम्हें सैर करा रहे हो बच्चों को ऐसे डेंजरस तरीके से। The motorcycle was locked up for 2 days. What a good way to teach somebody a lesson, huh? Yeah. So, sir, on this happy note, should we conclude the program? Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much for being here. And to our viewers, please subscribe to our channel and listen to the views and give your feedback, give your reaction, objections to all this. And you're all welcome. And don't forget to press the bell icon. The bell icon, yes. Yeah. Thank you very much for that, sir. Thank you, Raji. Thank you, sir. Thank you. God bless.